Hello student, myself Priyanka, your physics teacher. In our previous class we have learned about the refractive index, laws of reflection and some formula related to this. Today also we will find some derivation for refractive index and the factors on which refractive index depend as well as lateral displacement. So factors on which refractive index of a medium depends. First one, nature of the material medium. That means from which medium refraction takes place, it will depend on that. For example, if it is from water to oil or water to glass like this, the nature of the medium, refractive index depends on the nature of medium. Then the density of the medium. If the density of the medium is increased, then refractive index also increase. Just like I have explained already in my previous class, denser medium, rarer medium, like no. So refractive index depends on the density of the medium as well as it is depends on the color of light, or you can say that wavelength. As you know from your class 6 onward that there are 7 colors of light and their wavelength is also different. So on this wavelength also refractive index depend. Why? Because we know that wavelength of light is depend with its velocity now, and refractive index also depend on velocity. From this formula in previous class you have learned that refractive index is related to the velocity of light na. So as wavelength of light also depend on velocity, so refractive index depend on the velocity. Clear? Velocity as well as wavelength. Clear? These are the three factors on which refractive index depend. First one, nature of the material medium, density of the medium, color or wavelength of the light. Clear? Now there is 2 marks question may ask. Question may be long but the solution is very easy. 2 marks question is there. Refractive index of medium 2, or you can say that second medium, with respect to medium 1 is the reciprocal of refractive index of medium 1 with respect to medium 2. Clear? You have to prove this. 2 marks question will be there. You have to prove refractive index of second medium is the reciprocal of refractive index of first medium. Okay, so let us start. We know that from our previous class we already find the formula for refractive index now. If you forget that one, I suggest you to go through my previous video. We know that refractive index of second medium with respect to first medium is given by n21 ना. इस तरह से डिनोट किया जाता है, हम लोग पहले ही जान चुके. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको बाद में लिखते हैं ना. सो n21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. क्या फॉर्मूला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज which refractive index? It is the relative refractive index. So you know na, there are 2 types of refractive index, absolute refractive index as well as relative refractive index. Now n2, that means it is the relative refractive index. So relative refractive index of the second medium divided by relative refractive index of first medium. Now what is the formula? C by V2. For refractive index of the second medium, the formula will be C by V2. Now we know that n21 refractive index, it is which kind of refractive index? It is that relative refractive index of the medium. ठीक है? Because you can see there are 2 medium, first medium and second medium ना. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करेंगे उसको हम क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और जब एयर के साथ या वैक्यूम के साथ कंसीडर करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो n21 दैट मीन्स कभी भी अगर ऐसे लिखा रहेगा 2 नंबर रहेगा ना n21, तो वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? इट विल बी द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और अगर सिंगल नंबर से डिनोट करेंगे वो क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्यों इसको सिंगल से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स always we have to consider with air only or vacuum only. That's why here with single number we will represent that one. ठीक है? तो understood ना? This one is relative refractive index. That means we are comparing refractive index
of the second medium with respect to first medium, and this one is absolute refractive index of second medium, and this one is absolute refractive index of first medium. Clear now? Now as we have learned, absolute refractive index is equal to speed of light in vacuum or air divided by speed of light in that particular medium. So C by V2, it is formula for N2 now. Then what will be the formula for N1? C by V1. So it will be C by V2. This is reciprocal ना, so ये क्या उल्टा हो जाएगा, मतलब V1 by C हो जाएगा. Now C cancel out, so the formula will be V1 by V2. I represent here as a equation 1. Similarly, we can prove N12. What is the meaning of N12? Absolute relative refractive index of first medium with respect to second medium. तो इसके लिए क्या होगा? Absolute refractive index of first medium divided by absolute refractive index of second medium. तो similarly इसका formula क्या आया? V2 by V1. Now what we have to do? Just multiplying equation 1 and 2. That means N21 into N12. So it will be V1 by V2 into V2 by V1. So it will be cancel out. So 1 हो जाएगा. देखो V1 के साथ ये V1 cancel हो गया, V2 के साथ ये V2 cancel हुआ. तो कितना आया? 1. So N21 into N12 1 हुआ. तो N21 is equal to 1 by N12. So this is proof now. N21 means refractive index of second medium with respect to first medium is the reciprocal of refractive index of first medium with respect to second medium. Understood now? You can take a screenshot of this. Now learn another topic related to refractive index. Actually refraction through a rectangular glass slab. Question may ask like this: prove that in refraction through a rectangular glass slab, the incident ray and the emergent ray of light are parallel to each other. So here, which one is incident ray, which one is emergent ray? Like this ray AO incident on this glass, this is air medium and glass medium na, incident on this separating surface. So this ray is इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन इट इज इमर्ज फ्रॉम, या तो ग्लास स्लैब से क्या हो रहा है, निकल जा रहा है ना, तो इसीलिए BC दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे. क्लियर? तो सिमिलरली एंगल बिटवीन दिस फर्स्ट केस N1 N this one is N1 N dash first normal, so angle between this incident ray and this normal, it is known as incidence angle I, and R is refracted angle. Now one thing you have to notice, as it is a rectangular glass slab, no, so LM and PN, two lines are parallel, and this line OB intersecting these two lines, as a result this angle B, that means the angle OBN2, this one, and the angle N1 dash OB, this angle are alternate angle ना. देखो दो पैरेलल लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है that means OBN2 and N1 dash OB, दोनों क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है ना. इस तरह से देखो, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या ऑल्टरनेट एंगल होता है ना. तो सिमिलरली इधर देखो, ये और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल क्या रहता है, इक्वल रहता है. दैट्स व्हाई दिस angle R, this angle is also R, and this angle is also R. Clear now? And this angle is known as emergent angle. ये लाइट इमर्ज कर रहा है ग्लास स्लैब से, इसीलिए नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे का जो एंगल होता है उसको इमर्जेंट एंगल बोला जाता है. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दिस ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे मीन्स, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तब ये रे क्या है, स्ट्रेट ऐसे निकल जाता, एज द लाइट पास इन स्ट्रेट लाइन ना. दैट्स वाई, सो दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे and this is the emergent ray, so you have to prove this original path is parallel to BC. How can we prove that? Whenever this emergent angle and this incident angle will become equal, then what happens, these two rays are parallel na. So let us prove that these two angles became equal. You understood this figure na? Let me explain again. ये एयर मीडियम है जिसको हमने फर्स्ट मीडियम लिया है,
तो लाइट रे एयर मीडियम से आ रहा है और इस सेपरेटिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुआ है, इसीलिए इसको इंसिडेंट रे बोले। आफ्टर इंसिडेंट रे ये मीडियम जो है एयर क्या है, रेयरर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। एज ए रिजल्ट रिफ्रैक्टेड रे कम क्लोज टू द नॉर्मल, देखो नॉर्मल के क्लोज आ गया ना। अगर भूल गए हो ये पोर्शन सो मेरा पहला वाला वीडियो जाके देख सकते हो, यू कैन अंडरस्टूड देम। सो देखो रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ आर। आफ्टर दैट ये लाइट देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये ग्लास स्लैब है, अगेन ये एयर है, तो डेंसर मीडियम से क्या जा रहा है, रेयरर मीडियम में जा रहा है। इसीलिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये क्या हुआ, नॉर्मल से दूर हट गया। जो इमर्जेंट एंगल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। सो फर्स्ट केस में फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, रेयरर से डेंसर हो रहा है, इसीलिए नॉर्मल के करीब आया। और फिर ग्लास स्लैब से फिर से एयर में जा रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, पहले क्या एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर, है ना, इसीलिए ये जो है नॉर्मल से दूर हट गया। समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या किए, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई किए, एल एम और पी एम जो है पैरेलल है और ओ बी उसको इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए N1 डैश ओ बी एंड ओ बी N2 दोनों क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है, दैट मीन्स दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर। अब फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अगर मैंने इसको मीडियम 1 इसको मीडियम 2 लिया है, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास स्लैब, N21 refractive index, relative refractive index of the glass slab with respect to refractive index with respect to the air. N21 means refractive index of glass slab with respect to air, है ना। So it will be sin from the formula of sin I by sin R. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमको मिलता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल। इफ यू फॉरगेट दिस वन ना, प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब इसको भूल जाओ। अब सेकेंड मीडियम में देखो, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये एंगल क्या, आर एंगल इंसिडेंट जैसा बिहेव कर रहा है और इमर्जेंट जो है वो रिफ्रैक्टेड जैसा बिहेव कर रहा है। सपोज ये पार्ट हुआ ही नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, अब ये ग्लास स्लैब से एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये वाला एंगल आके नॉर्मल के साथ जो एंगल हो रहा है ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टिव एंगल है, तो क्या हो जाएगा N12 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने जा रही हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास स्लैब के रेस्पेक्ट में। सो N12 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब। तो इसमें कौन सा एंगल इंसिडेंट जैसा बिहेव कर रहा है, ये वाला। सो यू कैन राइट साइन आर डिवाइडेड बाय, और रिफ्रैक्टिव एंगल कौन सा जैसा बिहेव कर रहा है, एज ए इमर्जेंट एंगल, तो साइन ई। दिस आर टू इक्वेशन, ओके। बट जस्ट नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट N21 इज इक्वल टू 1 by N12 ना, अभी जस्ट प्रूव किए। तो from this first equation and second equation just put all this value, you can get sin I by sin R is equal to 1 by N12, मतलब क्या है, रेसिप्रोकल है तो ये उल्टा हो जाएगा ना, sin E by sin R। तो दोनों साइड से sin R कैंसिल हो गया, that means sin I is equal to sin E। दोनों साइड में साइन है तो साइन को भी कैंसिल कर दो, I इज इक्वल टू E, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ, द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे एंड द इमर्जेंट रे विल पैरेलल। क्लियर, दिस प्रूफ may come in your exam, 3 marks question will be there, you can take a screenshot from this term। You have to learn from this refraction through a glass slab, it is lateral displacement or lateral slip। You can see that there is a difference between this original path of incident ray and this emergent ray. Now I have drawn a perpendicular DE from this
ray. If you draw such perpendicular here also, as it is parallel, this distance will be equal knowledge. So this perpendicular distance between the original path of incident ray and the emergent ray is actually known as lateral displacement or lateral shift. So what is lateral shift? Lateral shift means the perpendicular distance between the original path of incident ray and the emergent ray is lateral shift. It can represented by lateral displacement also. You can use D in order to represent this. Now this lateral displacement depend on the थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब कितना पतला है या मोटा है उसके साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या हो गया, ग्लास स्लैब अगर ज़्यादा थिक होगा, अगर मोटा होगा तो उसका लैटरल शिफ्ट होगा, तब क्या होगा, लैटरल शिफ्ट जो है वो कम हो जाएगा. क्लियर. सो लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब and it is also directly proportional to the refractive index of glass slab. अब glass slab भी बहुत डिफरेंट काइंड का होता है ना, उसका मटेरियल जो है अलग हो सकता है, तो जिस उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अगर एक पर्टिकुलर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो उस ग्लास स्लैब से जो लैटरल शिफ्ट है वो ज़्यादा होगा. अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ग्लास स्लैब लेंगे तो उसमें लैटरल शिफ्ट क्या होगा, कम होगा. सिमिलरली द लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल. आई के साथ भी, इंसिडेंट एंगल के साथ भी लैटरल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे. लेकिन वेवलेंथ, इंसिडेंट रे के वेवलेंथ के साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. समझ में आया. लैटरल शिफ्ट होता क्या है, लैटरल शिफ्ट होता है इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, मतलब अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता तब जो सीधा पाथ जाता ना, देखो इसमें से अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो लाइट रे ऐसे ओरिजिनली स्ट्रेट में जाता, तो इमर्जेंट रे और ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल शिफ्ट. एंड दिस लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, directly proportional to the incident angle, directly proportional to the refractive index of glass slab, and inversely proportional to the wavelength of incident light. Okay, clear. This is all about refractive index and refraction through a glass slab. You can take a screenshot from this. Now let us discuss some let us learn some effect that happen due to the refraction of light in our daily life. Okay, so first as we start with refraction chapter, no, that whenever we place any pencil or stick obliquely partially immersed in water, and if we watch it from side ना, then it will be appear to bend, है ना. हम तुम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हो, अब जानोगे ये होता क्यों है, रिफ्रैक्शन के कारण. आज मैं कुछ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन बताऊंगी हमारे डेली लाइफ में. लेट मी टेल यू. So first point is a stick or pencil held obliquely and partially immersed in water appears to be bent at the water surface, है ना. जब भी हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर में स्ट्रॉ, स्टिक या पेंसिल ऐसे रखेंगे ना, तब क्या होता है, देखो ये ऐसे बेंट हो जाता है, मतलब होता नहीं है, हमको लगता है कि ये ऐसे बेंट हो गया है, कभी कभी लगता है ब्रेक हो गया है ना. फिर सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं, एंड ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर द वाटर अपेयर टू बी रेज्ड. मतलब अगर एक ग्लास ऑफ सपोज वाटर है और उसमें एक अगर कॉइन डाल दोगे तो क्या दिखता है, हमको लगता है कि वो कॉइन जो है थोड़ा सा, अगर साइड से देखोगे क्या लगता है कि कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठ गया है ना. सो ये भी क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. थर्ड example is a pool of water. You can also watch in case of bucket also. A pool of water appears to be less deep than it's actually it is. That means if you watch a pond or pool na from the upper side, you can see it seems to be less deep, है ना. इसका जो गहराई है वो कम लगता है ऊपर से, लेकिन वो और भी ज़्यादा गहरा होता है. ये क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देन द स्टार appear to ट्विंकल एट द नाइट ना. स्टार जो है ट्विंकल करता है ना, ये भी क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट.
देखो हर एक सरफेस जो हम लोग जानते हैं कि अर्थ के सरफेस के पास जो है उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, दैट मीन्स डेंसर मीडियम, और जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे एयर का डेंसिटी क्या होता है, कम होते जाता है, मतलब रेयरर मीडियम। सो लगातार रेयरर से डेंसर, डेंसर मीडियम तक ये रिफ्रैक्शन होने के कारण द लाइट रे दैट मीन्स द स्टार विल बी ट्विंकल, है ना, स्टार ट्विंकल करता है रात को। तो ये भी एक फेनोमेनन है जो कि रिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। द स्टार्स अपेयर टू बी ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट, देन ए लेमन केव्ड इन वाटर in glass timber appears to be bigger than its actual size when viewed from the side। मतलब एक ग्लास जार में मतलब वाटर है, उसमें एक लेमन या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिए और उसको अगर साइड से व्यू करेंगे, साइड से देखेंगे तो क्या होगा, उस लगता है कि उसका साइज जो है बिगर है, ग्रेटर है, लेकिन एक्चुअली वो उतना बड़ा साइज का होता नहीं। सो दिस आर सम एग्जाम्पल और दिस आर सम इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ। Many more effects are also there, you can find it and you can tell me in the comment section below. So hope you understand all this topic and enjoy the class. So if you find my video useful for you, please subscribe my channel and press the bell icon in order to get the notification of my latest video. Thank you.